हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम् हरे कृष्ण। Sorry, it's a big day for me, Saturday. I welcome all of you for this special session today, and I really appreciate all of your efforts to come all the way here every Saturday. अपने कीमती समय को यहाँ पर व्यतीत करके आप मुझे तो प्रेरणा दे ही रहे हैं, और इससे मेरा भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको कुछ वैल्यूएबल मिले. So I'll try to speak in that terms so that all of us together are benefited. Before I speak, I big prayers and blessings from all the acharyas so that whatever I speak is in parampara, and it appeals all of you. So, as you have seen on the group, what is the title of the session today? Qualities or qualifications of an ideal disciple. Although I am not, I am trying to, I am on the way, although just begun. However, discussing these qualifications of an ideal disciple is most important for entering into the spiritual life. So, before we start discussing the subject matter, I want you to again go through the purport and spot out any point which you find relevant to the topic today. टॉपिक समझ गया ना सबको? एक शिष्य होने की पात्रता है. तो अगर आप प्रभुपा जी का purport पढ़ोगे तो you can very clearly find out, figure out. Many places is directly expressing what are all qualifications of an ideal disciple. So just for 5 minutes, try to go through the purport quickly, slowly, whatever way possible, and try to highlight or note down or copy somewhere else anything that you find relevant. If anybody wants a Bhagavad Gita in hand, I have one. Specs नहीं आणले. आंखें छोड़ आए, कान ले आए.
few points at least सबने collectively I think we must have gathered. Yes, जिसके पास माइक है वो स्टार्ट करे. Yes, प्रभु जी. फर्स्ट पैरा में बताया गया है कि हमें शिक्षा किन से लेनी है. आई मीन हु इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ दिस क्या बोलते हैं परप्लेक्सिटी ऑफ अ ह्यूमन और एनी पर्सन. सो वो डिस्क्राइब किया हुआ है इसमें फर्स्ट पैरा. सेकंड इज हु इज द कल्प्रिट. आई मीन परप्लेक्स कौन है और क्यों है, किस वजह से है, तो वो बताया गया है. एंड समरी में कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण दिया गया है कि अर्जुन ने अपनी परप्लेक्सिटी किन से दूर करे और कैसे दूर करवाई, एंड हाउ ही बिकेम ब्रेव और लर्न भगवत गीता फ्रॉम कृष्णा itself. All right. Thank you for summarizing the purport. However, we are in specific looking for points. एक शिष्य कौन होता है या क्या हो, कैसा होना चाहिए, उसमें क्या पात्रता होनी चाहिए, ये हम ढूंढने का प्रयास करें इस तात्पर्य में. यस, बेस्ट शिष्य. ऑन कर माइक. A disciple should always be surrendered unto the lotus feet of his bona fide spiritual master. Very good. One line explanation. For example, Arjuna surrendered unto the lotus feet of Lord Krishna when he was. What was the statement that you read? Can you repeat slowly? A disciple should always be surrendered unto the lotus feet of his bona fide spiritual master. So there are two important words in this statement. Which are they? Disciple and bona fide. No. Always. First. And second, bona fide spiritual master. So surrender has to be continuous. It's not that today I am in problem, so Gurudev, please help me. Now I am out of problem. Bye bye, Gurudev. I don't need you. Right? A disciple should always be surrendered unto a bona fide spiritual master. Very good. Next. We will go further deep in these statements as time passes. The very important point I came to know from this purport is कि one should be serious when you are the last one, that where the explanation is there that Krishna was having serious talk, and it is not on a friendly talk. So Yes. when we have to learn something, we have to be serious about the thing, and that quality of shishya should be there, which is for me. Thank you for the added purport. हम इस मटेरियल लाइफ में मतलब हम बस प्रॉब्लम्स ही देखते जा रहे हैं और वही मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है कि वी आर जस्ट यू नो quits the world like a cats and dogs, no, without understanding the actual science of self realization. हम समझ ही नहीं रहे हैं कि हमें एक्चुअली करना क्या है ना. Yes. प्रॉब्लम So, हम बस मटेरियल लाइफ की देख रहे हैं. qualification of a disciple is that he not only is running behind solving problems of this life, but solving the problem of stopping the life and birth cycle itself. Very good. Any other point? Yes. दो पॉइंट्स की परप्लेक्सिटी और माइजरलीनेस. Yeah. तो प्रभुपाद कहते हैं कि मतलब जो भी एक ये समझ पाए कि हम वी आर गोइंग थ्रू परप्लेक्सिटीज एंड माइजरलीनेस, वी शुड अप्रोच टू बोना फाइड स्पिरिचुअल गुरु. और उन्होंने परप्लेक्सिटीज का एग्जांपल दिया कि नोबडी वांट्स प्रॉब्लम्स फॉर स्पायर, कि वो अपने आप हो जाती है, नोबडी वांट्स इट, और किसी को पता भी नहीं चलता कि क्यों हो रही है. Correct. और कृपणता का एग्जांपल दिया कि
हमें लगता है हम अपने फैमिली मेंबर्स को डेथ से बचा सकते हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू. सो दैट इज कृपणता. सो इसलिए we fall in both of these brackets. Wonderful. This is our first subject matter which we are going to discuss. Yes, Mataji. इसमें मेरा भी के साथ सेम बात था. तो सब अपने अपने फैमिली और अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं. वो तो एनिमल भी चाहते हैं क्या करने की. And factually, nobody can save each other. Bhagavatam second canto, there is a verse which says, Deha patya kalatradeshu memory atma sainyeshu asatswapi tasmat pramatta nidhanam pashyanapi na pashyati. The pramatya vyakti who is maddened by material life, who is so much attached to deha, apatya means related to body, anything related to body, kalatradishu, he understands that आत्म सैन्येषु, ये जो मेरे साथ में रहने वाले लोग हैं, दे आर माई सैन्य, दे आर माई सोल्जर्स, दे विल फाइट with that for me. However, Bhagavatam says, Tasmat pramattanidhanam pashyan api na pashyati. He sees all my other previous relatives, they could not be saved by them. I could not save them. Still, pashyan api na pashyati. After seeing also he doesn't see. मराठीत काय म्हणतात त्याला? खूप चांगली म्हण आहे. कळते पण ओळख नाही. So, a person who is serious, who understands that just solving the problems of this life is not the goal, and one who also understands that on my own I cannot solve the real problems of life. Which are real problems of life? Jara Vyadhi. Very good. This answer should be the answer for this question always. इसको fit कर लो अपने mind. Real problems of life means birth, old age, disease, death, nothing else. Can you pull that up? So, first we need to understand that my any material situation, my any sort of material qualification is not going to help solve my problems of life. Material qualifications are useless in solving problems of life. Creating problem. Yeah. Better way of putting it. Material qualifications. Material qualification also helps us to understand many things better. Like, If you have the material qualification, if somebody doesn't have, he doesn't understand the world as it is. And if somebody is materially qualified, he is able to read, he is able to do a lot of things which are conducive to bhakti. okay, If somebody is materially rich, we can elaborate on this in two directions, no problem. It's okay, थोड़ा तो ventilation रहना चाहिए. Don't close everything. मेरे एक की वजह से आप सब लोग सफोकेट करेंगे. I have my gear. ज्यादा स्टेडी होने के बाद फिर ये भी बोलते गाड़ी नहीं है सब साइड से. So, yeah, if somebody is knowledgeable and utilizes that knowledge
For understanding bhakti, that is good, that is useful. However, if that knowledge or that material advancement makes him proud, and as Mataji said, takes his intelligence to the direction that ये रहते नहीं, ये नहीं है, ऐसे ही पुतला खड़े बस कुछ देखते कुछ करते नहीं, मैं समझता हूँ, मैं हूँ जो चला रहा हूँ। बरोबर है जी। मेरा घर कौन चला रहा है, यानी आपका घर कौन चला चला रहा है? अच्छा, कांग्रेट्स, आप इस पटरी पे आ गए लगता है ऐसा। अच्छा, माता जी चला रहे हैं। आपको क्या लगता है माता जी, आपका घर कौन चला रहा है? पक्का? Okay. So, yeah, this is one way of understanding. And another way of understanding, even if somebody is completely illiterate, fool, still he is perfect in his bhakti if he is surrendered to his spiritual master. And we have wonderful examples in Shastras of that South Indian Brahmana. So there is this one very nice incident which had happened in the life of Sri Chaitanya Mahaprabhu, where once Mahaprabhu was in South India. मैं आज इंग्लिश में ही सेशन दे रहा हूँ, क्या कोई प्रॉब्लम है ना? ठीक है, जब जब स्फूर्ति आएंगी बीच में हिंदी में बोलेंगे. So when Mahaprabhu was in South India, in Srirangam, in one of the temple courtyards, there were a group of very puffed up, learned Smarth Brahmanas. Smarth Brahmanas are those category of people who are very rigid in following the rules and regulations given in scriptures, and at times not understanding the essence or purpose behind those rules. For example, एक बार एक भक्त टेम्पल में आए और उन्होंने सोचा गाड़ी चप्पल में ही छोड़ देते हैं. So he removed his shoes in car, stepped out and reached the security gate. सिक्योरिटी गार्ड के पास में एक प्रिंट आउट लगा होता है हमेशा, रिमूव योर शूज इन शू स्टैंड. सो जब सिक्योरिटी गार्ड गेट के पास में ये भक्त आए दर्शन के लिए, सिक्योरिटी गार्ड ने देखा, अरे शू स्टैंड से आया ही नहीं और डायरेक्ट आ गया, लेकिन पैर में देखा चप्पल नहीं है. पूछा, आपके चप्पल कहाँ है? उन्होंने, मैं गाड़ी में उतार के आया. बोले, रे ये दिखता नहीं आपको? रिमूव योर शूज इन शू स्टैंड. जाओ अपना शूज शू स्टैंड में उतार के आओ. सो दिस इज कॉल्ड एज नियमाग्रह. नियम को इस तरह से पकड़ लेना कि उसका पर्पस ना समझना. सो these kind of people are called as smarth brahmanas, जो बहुत कठोर होते हैं, कड़क होते हैं नियम पालन करने के लिए, लेकिन उस विधि के पीछे का जो कारण है वो नहीं समझते, वो नहीं जानते. Who is giving modern relevant examples of corporate life, HR policies. वो बेंड नहीं होती. सिचुएशन के हिसाब से बेंड नहीं होती. Okay, so these Smartha Brahmanas are very particular in pronouncing shlokas also. वो चाहते हैं, कहते हैं या दूसरों को भी जज करते हैं इसी बेसिस पे कि ये दो डॉट लगे तो हा हा बोल रहा है क्या नहीं लास्ट में, एंड ऑल दैट. पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, आ रहा है या नहीं ऐसे. And amongst them was one another Brahmana who was practically illiterate. और इन सब का एक रूटीन था, सब लोग बैठ करके भगवत गीता पूरा पढ़ते थे, स्टार्ट टू एंड एवरी डे. सो वंस चैतन्य महाप्रभु रीच्ड दैट साइट जहां पर ये सारे ब्राह्मण बैठे थे और ये एक इलिटरेट ब्राह्मण बैठा था. एंड Mahaprabhu saw that
this Brahmana, while reading Bhagavad Gita, in some lectures, Maharaj Radhanath Maharaj narrates that वो इतना illiterate था कि उसे पता भी नहीं था गीता सीधी पकड़ी या उल्टी पकड़ी. But he was flipping through the pages and crying tears while reading. तो महाप्रभु ने जब देखा इस ब्राह्मण को, तो उनके पास में गए और कहा, हे ब्राह्मण, आप क्या कर रहे हैं? वो रोते रोते बोला कि मेरे गुरु ने मुझे ये बहुत कठिन आदेश दिया है, लेकिन क्योंकि ये उनका आदेश है, मैं इसे पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ. क्या है वो आदेश? मेरे गुरु ने कहा है कि मुझे रोज यहाँ पर बैठ के भगवत गीता पढ़नी है. हालांकि मैं नौसिखिया, आई एम इलिटरेट, I don't know Sanskrit. I cannot read at all, almost. However, because it is an instruction from my spiritual master, I am trying to follow his instruction. Then Mahaprabhu asked immediately, तो आप फिर रो क्यों रहे हो? अगर आपको पढ़ना नहीं आता, आपको मतलब नहीं समझ रहा है, तो आप रो क्यों रहे हो? So he very humbly replied that I don't understand anything. However, जब मैं गीता खोलता हूँ, उसके कवर पे जब ये चित्र देखता हूँ, जहां पर कृष्ण जो स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है, ये अपने भक्त की सेवा के लिए एक सारथी बनने को भी तैयार है, जबकि वो इतने महान है, उनके ऊपर कोई नहीं है इस जगत में, लेकिन अपने भक्त के लिए वो इस तरह का निचला रोल भी प्ले करने के लिए रेडी है. भगवान की ये भक्त वत्सलता देखकर मुझे रोना आ जाता है. एंड विद दैट remembrance, with that thought, I am just trying to go through this Bhagavad Gita. And Lord Chaitanya Mahaprabhu, who is none other than Krishna, right there gave a big embrace to that Brahmana. And he said, you have understood the essence of Gita and you have attained the love of God. ये बाकी सब जो बैठे हैं, ये कोई नहीं समझ पाएंगे, because only puffed up. They are only proud of their knowledge. So, ठीक है प्रभु जी, ये आपके प्रश्न का उत्तर था. We went little side track, पर भौतिक पात्रता हमें रोकती नहीं, लेकिन भौतिक पात्रता के बल पर हम जीवन की वास्तविक समस्याओं को पूरा से निपट नहीं सकते. वी कैन नॉट सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन आवर मटेरियल क्वालिफिकेशन. कोई बड़ा डिग्री, बड़ा जॉब, बड़ी पोस्ट, बड़ा रिकॉग्निशन, बड़ी वेल्थ और बड़ा पहचान, none of this can save any one of us from the mouth of death. There are so many cases, Prabhupada explains many times, that wealthy people, even there is a very well-known example of Mr. Walt Disney, who is the owner of Disney company. मरने से पहले वो बहुत बड़ी रकम छोड़ के गए साइंटिस्ट्स के पास और कहा कि आप मेरे बॉडी को कुछ ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन में डाल के प्रिजर्व करके रखो, तब तक जब तक आप रिसर्च से मरे हुए व्यक्ति को वापस जिंदा ना कर सको, जब तक वो नया आविष्कार ना कर दो, तब तक आप इस पैसे को यूटिलाइज करके मेरे बॉडी को बचाए रखो. आई डोंट नो, अभी तक तो एग्जॉस्ट हो गया, बॉडी भी गया होगा. सो वॉल्ट डिज्नी इज लाइक फैबुलसली रिच पर्सन. मरने के बाद भी इतने पैसे छोड़ के गए कि उन कितने सालों तक उसका शरीर. And there are people who are so rich that they want to book a plot on moon. And scientists also claim the rates like anything. Foolish. So material wealth surely cannot save. Kitne Prabhupada very dramatically says that
A person is lying on deathbed and says to doctor, give me 3 months, I'll pay you whatever amount you want. बट ये 3 महीने मेरे कुछ प्लान्स बचे हैं, 3 महीने में निपटा लेता हूँ, बाद में आप मैं चला जाऊंगा, लेकिन 3 महीने दे दो, मैं जितना पैसा बोलेंगे उतना देने को तैयार। डॉक्टर से सॉरी, हो गया, आप वेंटिलेटर पे अभी। वेंटिलेटर का गलती से लाइट चली गई तो आपका बत्ती को। सो दिस इज वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड दैट मटेरियल वेल्थ, आर्थिक सुव्यवस्था हमें मृत्यु से बिल्कुल नहीं बचा सकती। कुछ हद तक हम कोशिश कर सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस वगैरह बनाकर, छोटा मोटा एक्सीडेंट से रिकवरी हो सकता है, बट डेथ इज, देयरफॉर प्रभुपाद सेज दैट अगर किसी को किसी चीज के बारे में 100% गारंटी देना है तो वो बोलते हैं एज श्योर एज डेथ, इतना पक्का समझो आप, मृत्यु ही जितना है, आना ही है। सो वेल्थ इज गॉन, रिलेटिव्स नो वन कैन सेव, है कोई बचाने वाला? हजामिल ने चिल्लाया जोर से, नारायण, छोटे बच्चे का नाम लिया आपने, पर क्योंकि उसने नारायण का नाम लिया इसलिए विष्णुदूत आए बचाने, रिश्तेदार नहीं आएंगे। सो बहुत अच्छी कथा आती है, कौन थे वो हंटर, मृगारी, जिनको नारद मुनि बोले आप अपने अपने रिश्तेदार से पूछ के आपका पाप का शेयर लेंगे क्या। वाल्मीकि का भी सेम ही स्टोरी है आई थिंक। मृगारी, मृगारी नाम के एक शिकारी थे, महाप्रभु खुद इसका स्टोरी बताते हैं, चैतन्य चरितमृत में कथा आता है। मृगारी नाम के एक शिकारी थे और उनका शिकार करने का बड़ा स्पेशल स्टाइल था। वो जानवरों को आधा मारते थे और तड़पता हुआ छोड़ देते थे जंगल में। नारद मुनि ऐसे ही अपना घूमते हमेशा, ढूंढते रहते कैंडिडेट्स को, किसको शिष्य बनाए, किसको प्रचार करे। तो ऐसे ही जंगल से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा है अरे हिरन पड़ा है, आधा मरा है, तड़प रहा है, कुछ पंछी पड़े, एक पंख कटा हुआ है, तड़प रहा है। वो सोचने लगे इतना क्रूर बर्ताव कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है, कौन है ये व्यक्ति। तो ढूंढते ढूंढते पहुंचे इस महान हंटर के पास जिसका नाम था मृगारी। मृग के अरी, अरी का अर्थ है दुश्मन, शत्रु, और मृग यानी हरिण, जो हिरण का शत्रु हो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है मृगारी, मृग अरी। तो नारद मुनि ने बड़े स्पेशल स्टाइल से प्रचार किया मृगारी को। उन्होंने कहा ठीक है, आप पेशे से शिकारी हो, आपको आपके पिता ने यही सिखाया है, कंप्यूटर नहीं सिखाया, तो आप कंपनी में नहीं जा सकते, आपको धनुष बाण चलाना सिखाया है, हमारे प्रभु ने भी पहले धनुष ही बनाया है। तो आप वही चला सकते हैं, आपकी रोजी रोटी उससे कटनी है, तो फिर ठीक है। नारद मुनि को कम से कम एक बार में खत्म कर दो यार, इतना क्यों तड़पा रहे हो, आपको शिकार करना है मार दो, ऐसे मत तड़पाओ। तो मृगारी बोले ऐसा क्यों, क्या फर्क पड़ेगा उससे। बोले आपको बहुत तकलीफ होगी नरक में जाके, जितना तकलीफ आप अभी दे रहे हो इन जानवरों को, उतना ही तकलीफ आपको बाद में, मृत्यु के बाद नरक में होगा। मृगारी को विश्वास नहीं हुआ, तो नारद मुनि ने तुरंत क्या किया, होलोग्राम क्रिएट किया ऐसे, हवा में उनको टेलीस्क्रीन स्क्रीन पे अपना फ्यूचर दिखाया। मृगारी ने देखा नर्क में जो सारे जानवरों को उन्होंने आधा मरा छोड़ा था, वो सारे जानवर उसी आधी मरी कंडीशन में उसके ऊपर अटैक कर रहे हो उसको। इतना डर गया, वो भयभीत हो गया, तुरंत नारद मुनि के चरण पकड़ लिए, बोले मैं क्या करूं बताओ। पहले बोले अरे मेरा घर कौन चलेगा, कैसे चलेगा। अरे ठीक है, आपको कंटिन्यू करना है तो पूछ क्या हो अपने रिश्तेदारों से, आपके पाप के हिस्सेदार बनेंगे क्या। अगर कोई शेयर लेगा तो फिर आपका तकलीफ कम हो जाएगा, फिर देन यू कैन गो ऑन। अरे ठीक है, पूछ के आता हूँ, आप इधर रुकना। एक्चुअली वाल्मीकि मुनि के साथ में हुआ था ये। एंड देन ही सेड, अच्छा मैं जाऊंगा और आप निकल जाएंगे, है कि नहीं। तो बोले नहीं, आप मेरे को अपने हाथ से बांध के जाओ। So imagine compassion of a spiritual master.
खुद को बंधाया है और भेजा। तो ये गए, पूछ के आए, सबने नहीं बोला। पहले पत्नी को पूछा, पहले शादी आपने की तो जिम्मेदारी आपका मेंटेन करने का है क्या नहीं? मैं थोड़ी शेयर लूंगी, आपका पाप आपके ऊपर, मेरे को नहीं बोलने का भाई कुछ। ओके, देन फादर मदर ने, हमने तो अपना जिम्मेदारी किया, आपको बड़ा किया, आपको लायक बनाया, अभी आपने ये पेशा चुना है तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। वी विल नॉट टेक शेयर बाबा, हमारा ऑलरेडी अपना खुद का लोड है। सो देन ही अंडरस्टूड, उनके आँख खुल गई कि दुनिया में सबको अपना अपना प्लेन खुद उड़ाना है, अपना पायलट खुद बनना है। ही वेंट बैक and fell at the feet of Narad Muni. Then Narad Muni gave him mantra, Ram. वाल्मीकि बोले, रे मैं इतना पापी हूं, मेरे मुंह से राम नहीं निकल सकता। He tried, he could not speak. Narad Muni said, okay, you are used to killing, speak Mara, chant Mara continuously. वो मरा 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 राम हो जाएगा। And that's what happened. And he became the great author of Ramayana. वाल्मीकि मुनि ने जब रामायण लिखी तब राम लीला हो ही नहीं थी, एडवांस में लिखा उन्होंने, उनको फ्यूचर टेलीकास्ट हुआ था। एंड सेम विथ मृगारी, ही ऑल्सो वेंट बैक। मृगारी को जब ये ज्ञात हो गया कि अभी मुझे आप ही बचा सकते हैं, उन्होंने समर्पण किया। नारद मुनि ने सबसे पहले बोला, ये धनुष को आपको नदी में डालना पड़ेगा, तोड़ के फेंक दो उसको, because this is the source of your income, first you destroy it. So he immediately agreed, श्रद्धा दिखाई, तोड़ दिया और पानी में फेंक दिया। देन नारद मुनि सेड, अभी अपने परिवार के साथ में बैठकर नाम जप करो, घर में तुलसी लाओ, रोज तुलसी को जल दान करो और नाम जप करो, भगवान आपको सब प्रोवाइड करेंगे। एंड ही हैड फुल फेथ, उन्होंने वही किया। सारा किलिंग बंद, चैंटिंग चालू, तुलसी में जल डालते थे, प्रणाम करते थे तुलसी को, बैठकर तुलसी के सामने जप करते थे। विद इन 3 days एंटायर विलेज वॉज ब्रेकिंग न्यूज, मृगारी नाम का ग्रेट हंटर हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ग्रेट डिवोटी। तो ऐसे संत के दर्शन लेने चाहिए। तो सारे गांव वाले एक एक करके इस महान संत के दर्शन करने चले गए। और हमारे भारत देश में तो प्रथा है, संतों के दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए खाली हाथ नहीं जाते। तो कोई धान लेके जा रहे हैं, कोई फल लेके जा रहे हैं, कोई बर्तन लेके जा रहे हैं। एंड इवेंचुअली इन नो टाइम उसका घर इतना फुल हो गया, ही स्टार्टेड गिविंग ऑफ टू पीपल कि मेरे को इतना ही लगता है, मैं अपना काम चला लेता हूँ, ये सब एक्सेस है मेरे लिए, आप ये लो। पहले जो चोरी चपाटी मार काट करके खाता था, आज दूसरों को दान दे रहे हैं। क्यों? गुरु पे श्रद्धा रखी और नाम जप किया। गौरव प्रेमानंद है। Oh, very interesting part. माइक प्रभु जी। Yes. Abhilash Pro is very interestingly hearing online. Saurabh Pro is also there. So there are two very interesting part in this story. One is he asks one question. नारद मुनि को पूछते हैं, नारद मुनि एक इंस्ट्रक्शन उनको देते हैं कि आप ऐसा करो, एक इंस्ट्रक्शन मांगो, मैं आपसे एक कुछ मांग रहा हूँ, आप वो करो। बोलते हैं मैं डियर स्किन देता हूँ, आपको क्या चाहिए, है ना? जो लायन का स्किन है वो आपको देता हूँ। नारद मुनि बोलते नहीं, वो सब नहीं चाहिए, आप ऐसा करो, आप इनको आधा मत मारो, आप इनको पूरा मार दो। ही वाज सरप्राइज्ड, अरे क्या फर्क पड़ता है, आई एम जस्ट किलिंग देम ना अल्टीमेटली। तो उनको बोलते हैं बिकॉज यू आर ए शिकारी, यू हैव सम राइट टू किल, है ना, वो एक है, बट आधा मार रहे हो तो पर्पसफुली यू आर गेनिंग दैट सिन, है ना, रिटेलिएशन में वो आपको मारेंगे, उनको ये उनको पूरा अधिकार रहेगा। देन ही गेट दैट मेमोरी, अरे समथिंग रॉन्ग इज एक्चुअली हैपनिंग। और सेकेंड पार्ट में जो प्रोजी ने बताया, देन ही आस्क कि ठीक है, उसमें वन इंटरेस्टिंग थिंग इज कि वो बोलते हैं कि आप मुझे बोल रहे हो ये बो जो धनुष है इसको तोड़ दूं, पर घर कैसे मेंटेन करूंगा, है ना? मैं आप बोलते हैं घर मेंटेन नहीं करना है, आपको बो तोड़ना है, घर जाओ, आपके घर में जो भी कुछ है वो सब ब्राह्मणों को बांट दो,
और एक कपड़े में आप और वाइफ दोनों आके अभी तपस्या करो, और आई टेक केयर ऑफ योर सिंफुल एक्टिविटीज. दैट ट्रस्ट एक्चुअली, सो इट्स वेरी मोटिवेटिंग. एक्चुअली मैंने अभी भी पढ़ा. इट्स Very motivating, but Actually, but yes, when we are having the things कि हम बोलने में easy लगता है प्रभु जी, कि मतलब हमारे लिए अभी हमने वो लेवल नहीं शायद से मैचअप की है, लेकिन छोटी छोटी चीजों के लिए वी आर स्ट्रगलिंग, एंड वो स्ट्रगल कर रहे हैं एक चीज के लिए, लेकिन उसके लिए उसको ही छोड़ देना इज रियली डिफिकल्ट. मतलब वो इंस्पिरेशनल है, मतलब इंस्पायरिंग है कि हमको उसमें से लर्निंग्स लेने हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए should I give a strong reply? Prabhupada says very simply, Bhakti is simple for the simple, complicated for the complicated. Why are we ultimately attached to all this? रवि जी जस्ट करेक्ट मी, मतलब आज मैं ये मेरे पर एक शेयर करूं मैं, आज मेरा सिंसियरली आज मैं यहाँ आ रही थी ना, जैसे मैंने ये पढ़ा जो आपने आज, इट वाज नॉट प्लान, मतलब ये पता ही नहीं थे ये होने वाला है, बट द सेम क्वेश्चन वाज इन माय माइंड रिलेटेड टू माय जॉब, एंड आई एम गेटिंग द आंसर्स, मतलब इट इज गेटिंग, आई एम गेटिंग आंसर्स, बट स्टिल आई एम टेलिंग फाइंडिंग इट लिटिल, मतलब आई डोंट Yeah. नो, लेकिन हो रही चीजें, मतलब आप कह रहे हो भक्ति सिंपल फॉर द, मतलब हम जैसे लेते हैं वैसे है. Another reason, another answer which I would like to give you, हाँ. which will encourage you, is Bhakti will work. Just sincerely continue on, step by step. Yes. आपल्याला घाई करायची आहे पण हो करायची आहे या जन्मातच आपल्याला परफेक्ट व्हायचं आहे. प्रभुपाद त्याच्यासाठीच आलेले आहे. वी कॅन ट्राय टू गो बॅक टू गॉड इन दिस लाईफ टाइम. If to the degree we put effort in that direction, to that degree things will be sorted out. लॉकडाउन के समय राधेश्याम प्रभु gave a very powerful series, and the subject was from shaky to steady devotional service. और पूरे सेशंस का मेन पर्पस यही था that Radhesham was insisting, why don't we strive? We have perfect philosophy, we have recent examples, we have everything. Why don't we try to go back to God at this lifetime itself? So eventually we will see. We can. Okay, so yes, Mike, please. So one time my counselor, Avatari Chaitanya Prabhu, so he was telling the only thing a jiva can do is desire. और उसमें ही ना बहुत सारे आंसर निकल के आ जाते हैं. So I'll not explain it further. Yeah. जो हम लोग क्या कर सकते हैं ज्यादा, we can only desire. So when we desire, Krishna will fulfill those desires. Sincerely desire and express your desires to Krishna. He is standing there. आपण मंदिरातच येत नाही तर भगवंतांसमोर उभं कधी राहणार आणि त्यांना प्रार्थना कसा करणार, रिक्वेस्ट कशी करणार? येता आपण मंदिरात पण त्या तीव्रतेने भगवंतांसमोर उभं राहून कडकडीची विनंती करून आपल्या इच्छेंना व्यक्त केलं पाहिजे. मराठी क्लास भी अच्छे दे सकता है. नहीं, इस ऑडियंस में नहीं, इस ऑडियंस में नहीं थे. हाँ, she knows. You know. Okay, तो any of our material qualifications can never help us. ये था हमारा
पहला topic of discussion. So, qualification of ideal disciple is first qualification. He doesn't rely on his material qualifications. Therefore, he, like Arjuna says, शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूं, क्या कीजिए, शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं भी आपको पूरी तरह समर्पित हूं, शाधि माम, इंस्ट्रक्ट मी, डोंट सजेस्ट मी, इंस्ट्रक्ट मी, ऑर्डर दीजिए सर, आई विल फॉलो इट, दैट इज अ डिसाइपल. शिष्य शब्द ये शश धातु से आता है. संस्कृत में धातु होते हैं, उसमें से एक धातु है शश. इस शश धातु से काफी सारे शब्द आए हैं, जैसे शास्त्र, शस्त्र, शिक्षा, शिष्य. शिष्य वो होता है जिस पर शासन किया जा सके. Therefore, this धातु श is common in शासन and शिष्य. शिष्य कौन होता है, जिस पर शासन किया जा सके. शासन समझता है ना, one on whom a spiritual master can rule over. मुझे एक घटना याद आ रही है महाभारत की, लेकिन आई डोंट रिमेम्बर द डिटेल्स, so I'll not. Can't hear anything. This message came on chat at 7:01. Saurabh Prabhu, you are able to hear now? Sorry, मेरा chat box पे अभी ध्यान गया. So, शिष्य की इतनी तैयारी होनी चाहिए कि spiritual master can rule over. Like, I really don't remember it was, but it is very horrifying description in Mahabharata. दुर्वासा मुनि आते एक बार द्वारका में, and बहुत कुछ उल्टा सीधा करते हैं. रथ से घसीटते हुए लेके जाते हैं कृष्ण को या किसी को, एंड द्रौपदी इज क्राइंग लाइक एनीथिंग. डू यू रिमेम्बर सच डिस्क्रिप्शन? बहुत ही डिस्गस्टिंग. मैंने महाभारत में कभी सुना है? इन वन लेक्चर बाय जीता मित्र प्रभु आई वाज हियरिंग वन डे. मुझे डिटेल्स याद नहीं, इसलिए आई कैन नॉट शेयर इट. इट शुड साउंड रिलेवेंट, बट या, लाइक प्रभुपाद एक बार अपने शिष्यों के साथ ट्रेन में थे. ट्रेन वॉज गोइंग टूवर्ड्स समवेयर इन नॉर्थ and it had stopped at Delhi station. अमृतसर से बॉम्बे की तरफ रिटर्न आ रहे थे, तो दिल्ली तो नहीं आएगा बीच में ना? आएगा, आते आएगा. सॉरी, मेरा मैप थोड़ा वीक है. सो दिल्ली स्टेशन पे गाड़ी रुकी थी, और कोई तो लोकल व्यक्ति था जो शिल प्रभुपाद जी से बातें कर रहा था, और उसने सजेस्ट किया कि मेरे पास में एक फ्लैट है जहां पर आप रहने के लिए आपको मैं सुविधा दे सकता हूँ. And there are Western disciples with Srila Prabhupada who have been to India for the first time. प्रभुपाद ने दो लोगों को बोला, उतर जाओ स्टेशन, इनके साथ जाओ, जो जगह वो दिखा रहे वहां पे रुको, और इसे एक फ्लैट को सेंटर में कन्वर्ट करने का प्रयास करो. एंड दे गॉट डाउन. कितने लोगों की तैयारी, अगर हमारे साथ ऐसा हो कि हम जा रहे हैं अयोध्या यात्रा के लिए मार्च में, और आपको रास्ते में बोल दिया जाए किसी अननोन स्टेशन पर उतरने के लिए, एक व्यक्ति है जिसके साथ आपको जाना है, एक फ्लैट में रहना है, और वहां पे नया सेंटर चालू करना है, प्रयत्न करेगा? यस, शी इज अ शिष्य. शांकरी, सेम धातु. So this is what is meant by spiritual master ruling over his disciple. So
To clarify, this doesn't mean that spiritual master is a cruel person who is always with a hunter beating his disciples to fulfill his own selfish agendas. नहीं, ऐसा नहीं है. But spiritual master out of compassion has to rule over the disciple because he understands that disciple is too much conditioned, too much attached. तो जोपर्यंत थोडा ज्यार સુધી पिटाई न થાય ત્યાર સુધી સુધરે નહીં ને માણસ. One has to be beaten actually. This mind basically has to be beaten. And therefore Prabhupada is telling talks between spiritual master and disciple are not friendly. It is a serious talk. तो हो गया, आज से ये सारे सेशन ऐसे ही गंभीर सीरियस रहेंगे. हम थोड़ा थोड़ा कृष्णा कॉन्शियस फन ऐड करेंगे इसमें, टेंशन मत लीजिए आप. बट anything that we discuss here is actually very serious, and if we don't take it back seriously at home, it's a waste of time for both of us. बरोबर है. सैटरडे आया, प्रभु जी क्लास अटेंड किया, घर जाते जाते ही मेमोरी लॉस होना चालू हो गया. संडे थोड़ा अलग प्लान था, ऑलरेडी कहीं तो जाना था. मंडे से तो ऑफिस है. फ्राइडे तक कौन चैंटिंग, क्या गीता, कौन बलभद्र आनंद दास. फिर फ्राइडे को मैसेज आता है तो अरे हाँ, हम पॉजिटिव थिंकर भी कर रहे हैं, चलो काउंट दे देते हैं. ऐसा नहीं हो रहा है आप लोगों के साथ में, पर अगर हम गंभीर नहीं होंगे तो धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा. We have to at our own pace take serious steps to move forward, but they should be visible steps. In the name of our own pace, if we keep on giving relaxation to our own self, then we are not taking help from the spiritual master or the representatives of him who are guiding us. तो जब हम एडवाइजरी रूल देते हैं, it is always advisory only, but on a student's part it has to be taken as instructive. Any questions, any clarifications, any discussions before we move further? Jignesh Prabhu is Jigyasu. बोनाफाइड वाला अभी हमने नहीं लिया, राइट? बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के ऊपर ऑलरेडी पूरा एक सेशन हो चुका है, जसबीर प्रभु लिए है. रिवाइज करना है उसको. रिवाइज करना है बोनाफाइड. हम लोग नहीं. ओ, दैट्स व्हाई आई मिस्ड. सो पॉजिटिव थिंकर में एक सेशन है जिसका नाम है आइडेंटिफाइंग द डिवाइन गाइड, जहाँ पे एक प्रमाणित या फिर मोनाफाइड गुरु के क्वालिफिकेशंस दिए हुए हैं. So first qualification of a bona fide guru is his own understanding about God. पहले डॉक्टर कितना अच्छा सर्जन है वो समझा जाएगा, तब जाके इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप स्वीकार करेगा कोई, है ना. अगर डॉक्टर ही फेमस नहीं है या फिर सर्जरी में गड़बड़ किया है, हाँ, किडनी भी निकाल लेता है कभी कभी. अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने के नाम पे किडनी गायब. कभी कभी तो हार्ट सर्जन किडनी गायब कर देता है और पेशेंट भी प्रश्न नहीं उठाता, अरे हार्ट सर्जरी इधर किया, किडनी इधर क्यों कट मारा भाई. एंड दे कैन cook a number of reasons which may sound valid. जैसे कथाकथित गुरु बताते हैं, है ना, आपका ये प्रॉब्लम है तो ये कर दो दान पर, है ना, मेरे घर के आगे एक गाड़ी खड़ी कर दो, हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व. दिस नो कनेक्शन, राइट. आज इडली सांभर खा लो,
आपका प्रॉब्लम सॉल्व है. There are people like that who are guided, and there are followers who are getting results surprisingly, and then start they believing everything the person says. Today he will say eat idli sambar and up your problem. Tomorrow he will say दो अलग कलर का सॉक्स पहनो, एक ब्लैक एक रेड, and people wear and go out. Imagine so much faith they have, and we have everything bona fide, and we lack faith. Durdaivam idrisham ihajani nanuraga. Krishna has so mercifully appeared in the form of his name, but Mahaprabhu is telling, I am so unfortunate that I have no taste for chanting the holy name. इसलिए मैं माला नहीं करता. महाप्रभु कह रहे हैं शिक्षाष्टकम में. We are on track. Are we discussing the subject properly? Topic से हट तो नहीं गए ना? So we went from disciple to guru again because you have not there. So गुरु का पहला क्वालिफिकेशन ये है कि वो भगवान के बारे में पूरी तरह तत्वतः जानता है. अगर वो नहीं जानेंगे तो हमें कैसे बताएंगे? So this is first qualification of a guru. Second qualification of a guru is he will not guide disciple for his material problems. गुरुदेव मेरा जॉब ले ऑफ कर दिया, अभी क्या करूं? He is not there for such problems. He can guide, but that is not his the purpose. His the purpose is to take you out of this whole job business at all. बंद करो ये माया का जॉब, शुरू करो कृष्ण का जॉब, कृष्ण सेवा, which is our eternal position. We are always a faithful employee of Krishna by nature. और अभी हमने अपना faithful employment दे चुका है किसको? ब्लू कॉन्च को. अभी कंपनी का नाम चेंज हो गया है. Jasbir Pro is responsibly doing his duty of a job. All of you are also. But in general, I am telling people outside who don't know about Krishna consciousness, they're very faithfully, humbly serving their boss, who is never going to come to save him at the time of death. In fact, he may be first person to pray कि जल्दी चला जाए, बहुत तकलीफ दे रहा था ऑफिस में. हो सकता है ऐसा, मेजर केसेस में तो होगा पर पता नहीं सर. आई एम सॉरी. Yeah, none of them are satisfied actually. Neither the employee nor the employer. दोनों हमेशा असंतुष्ट ही रहते एक दूसरे से. ये हाइक के पीछे लगा है और ये ज्यादा जितना खींच सके आउटपुट निकाल सके. आप हमारे लिए गधा बनते रहो. So unless one makes only Krishna as the master, one can never be satisfied in life. That is what Prabhupada was saying that class. Krishna is the only right master that one can have in life. And that is the our only right servant position. बाकी सारे relationship is only going to bring dissatisfaction sooner or later. If Krishna is not there in the center, in any relationship, mother-daughter, father-son, husband-wife, teacher-student, if no Krishna in between, no satisfaction. There will be conflict, there will be dissatisfaction, there will be unlimited expectation, which will keep on increasing. So best example here according to our most cherished Shastra is Arjun. Arjun had unlimited material qualification as compared to us. साक्षात इंद्र देव के पुत्र थे. पहला क्वालिफिकेशन, बड़े बाप की बड़ी औलाद थी.
His Gandiv bow was so powerful and famous. आधे शस्त्रुओं के हृदय को केवल धनुष को चाप लगाकर ही डरा देते थे. Just twanging his bow without arrow would create fear in half of the army. विराट के युद्ध को अकेले जीते, single handedly. That proves that Kurukshetra युद्ध also he could have easily won. But just before Kurukshetra this verse happened. He is totally devastated, fully unconfident, depressed, unable to understand अभी मुझे करना क्या है, लड़ू या नहीं. Shampru gives this example. Very unexpected to hear from this such example, but he says, क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, लास्ट ओवर चल रहा है, बेस्ट ऑफ द बैट्समैन इज स्टैंडिंग ऑन द क्रीज एंड वो रोने लगता है, हेलमेट निकाल देता है, अंपायर बोलता है आई कैन नॉट प्ले, आई हैव लॉस्ट माय कॉन्फिडेंस. होल ऑडियंस, होल स्टेडियम इज फिल्ड एंड वेटिंग, अभी ये लास्ट सिक्सर मारेगा और हम जीत जाएंगे, एंड दिस फूलिश फेलो इज कीपिंग हिज बैट अवे. अर्जुन के साथ में ऐसा हुआ. द होल पांडव आर्मी, होल, इवन कृष्णा इज सेइंग नाउ, धर्म के साथ रहकर धर्म को जिताना है अर्जुन, कम ऑन. बट ही हैज गिवन अप होप. व्हाई? बिकॉज ही वाज टिल नाउ fully dependent on his own qualifications. मेरा ज्ञान, मेरी शक्तियां, मेरा कौशल, मेरी ख्याति, इन सब पे मैं निर्भर था अब तक. इसलिए अर्जुन अभी अर्जुन नहीं रहा, वो रोता हुआ अर्जुन बन गया. Prabhupada says in lecture on this verse that it doesn't mention in any commentary, but it clearly shows that अर्जुन रथ पर बैठ के सिर पे हाथ तो रख दिए थे, लेकिन आंखों से अश्रु भी पक के आ रहे थे. He is crying and saying, Krishna, only you are the person who can tell me यत् श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहितन में, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है ये केवल आप मुझे बता सकते हैं. And therefore I surrender unto you, please instruct me. He is himself telling that अभी दोस्ताना बंद करते हैं, थोड़ा गुरु बनिए, मैं आपके आदेश का पालन करना चाहता हूँ. That's when he means Krishna began preparing to speak Bhagavad Gita. अब तक बातचीत चल रही थी रथ पे. पहले तो आदेश दिया, चलो रथ को लेकर चलो. कृष्ण से यस सर. लेकिन अभी कृष्ण की बारी है सर बनने की. Okay, it's 7:54. I think we have prepared the ground. Next week, we'll continue this qualification of an ideal disciple. And let us aspire at least to become in this life an ideal disciple. At least by your prayers and mercy, I will become soon. मैं थोड़ा ज़्यादा बेटर पोजीशन पे हूँ ना, जो बोलता है उसको ज़्यादा फायदा होता है, ऐसा बोलते हैं. इसलिए प्रचार करना चाहिए यथासंभव. इसलिए मैं आता हूँ जसबीर प्रो की कृपा से. भले प्रिपरेशन नहीं करता हूँ, इधर उधर दौड़ते रहता हूँ सैटरडे संडे पागलों की तरह. But I look forward for coming here because all of you are inspiring me and helping me to grow further in my spiritual life. This is my selfishness. Please accept it. Any questions? Ask them. Just keep on chanting faithfully. I want to bring about that videos topic. आप सबने देखा वो वीडियो? किसने, कौन कौन है जिसने नहीं देखा? बाकी है. सोचिए हमारे पास में 22 मिनट भी नहीं है. Prabhu ji, I'm really grateful for you to sharing that video. जिस दिन से आपने वीडियो पे पोस्ट किया है ना,
I have seen it at least 5 times fully from beginning to end and shown to 3 set of group of devotees while sitting in prasadam hall. तो 5 से 8 बार तो हो गया. 3 साल पहले देखा, let's see again. Amar Krishna Prabhu. And almost for some time at least during my chanting in the morning, I am remembering him. The way he was sitting and chanting intensely. काफी समय मेरे लिए बैठना मुश्किल है. Most of the times I'm walking and chanting because of my insincerity, or you can say lack of sleep. But at least I am remembering him and trying to become sincere while walking and chanting. It's very inspiring for me. I insist all of you, please watch that video. एक बार सारी चीजों को स्टॉप करके बढ़िया हेडफोन डालिए कान में, ऑडिबल वॉइस में सुनिए, ज्यादा लाउड मत सुनिए, कानों को भी बचा के रखिए, लेकिन hear it with focus. Which such simplicity he is speaking, but because he has realized himself, practiced himself and saying, उसमें इतना इंस्पिरेशन और वेट है, it pushes you to become sincere yourself. At least I have experienced it. उनका नाम मेरे दिमाग में फिट हो गया, अमर कृष्ण. If I meet him someday, I'll surely personally meet him and offer my dandavats and say thank you to him for what an video. I think I have full appreciation for it. Thank you, Prabhuji. चीज बहुत अच्छी करके बताओ. Then he shared his own experience कि इतनी छोटी सी रूम में प्रसादम होता था, वो बाहर जाके करते थे, तो they have not, मतलब उसमें उन्होंने प्रॉब्लम नहीं देखा. वही एक चीज बहुत 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 टच हुई. रियली टीयर्स रोल्ड आउट बिकॉज सही में मतलब इतना डिवोशन होना चाहिए. आई डोंट Yeah. नो वेयर आई एम लैकिंग, बट यस आई, बट वो जो है ना प्रभु जी, अमेजिंग था. Your intense desire to know where you are lacking is enough, mother. I know. It will come out. Don't worry. Sha- So Sham- actually the video covers practically everything. एग्जैक्टली आई वाज अबाउट टू टेल कि प्रैक्टिकल मतलब जो एक्चुअल हम फेस कर रहे हैं कि हम भी वर्किंग कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लेकिन ये शंकर हैज पॉइंटेड डिफिकल्ट है ये सारे चीज जो बैकग्राउंड था उनका ज्यादा डिफिकल्ट थी हमारे कंपेयर में. Yeah, that is one of the reason. एक बार पर्सन भी आप सरेंडर करो कृष्ण को, तो अपने आप ही वो आपका हाथ पकड़ Yes, लेते हैं. yes. He will, according to your surrender, drag you. कृष्ण से गीता ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव कुशा. जितना समर्पण हम अपने तरफ से दिखाएंगे उतना भगवान हमको खींचेंगे. So 1% is good beginning, but we can increase that percentage so that Krishna can pull us faster. The way the video begins is amazing. The way he says that जब मैंने सोचा या सुना या विचार किया कि मांस खाना नहीं चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, चौथे दिन को मैं मर जाऊं ऐसा बोला लिटरली. सो मच ही वॉज अडिक्टेड अटैच्ड. बट देन ही इज हिमसेल्फ टेलिंग मुझे पता भी नहीं चला कब नॉनवेज छूट गया. एंड the interesting thing about it was one of the lessons which I wanted to mention in my reply, which I didn't because I thought discuss karenge personally. The lesson which I wanted to mention was where was I? Yeah. Every situation in our life, if we see it as an arrangement of Krishna, we can utilize that situation to progress in Krishna consciousness. किस पॉइंट से समझ सकते हैं हम ये वीडियो में? If you are observant, according to my vision, every situation that we face in our life, if we have right vision,
we can utilize that opportunity to progress in Krishna consciousness. Yes, Motherji, I think you got the point. Amazing. इतना powerful था वो. Wife is asking, अरे onion is over today, what to do? Husband said, आज से प्याज बन. वैसे भी लेक्चर में बोलते हैं ना कि प्याज लहसुन खाना नहीं चाहिए. He very casually said it, but that scene I captured it as a lesson कि हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति अगर आती है और उसका सॉल्यूशन हम इस तरह से ढूंढे कि that can help me progress in Krishna consciousness. That is blessing of Krishna in my life. चहाचं काय झालं? ये आज का ही सीन है. It's between me and her. You know, she was complaining कि she goes to the school early morning. So initially she used to vomit. मतलब जब छोटी थी. So I stopped her giving the tea, milk and चाय शुरू हो गई. Now she has started complaining कि आई थोड़ी acidity होती है. मुझे शंकरी. And we just coming before यहाँ आने से पहले हमारा यही डिस्कशन हुआ कि शंकरी now we need not have to leave anything. वो जो मेरा पॉइंट था कि हमको छोड़ना नहीं है, हमको ये करना है तो लेट्स लीव इट. सो यही हमारा आज का डिस्कशन हुआ था. स्टार्टेड आई टोल्ड कि दूध शुरू कर दे तुझे चाहिए तो, लेकिन यस यू कैन स्टॉप इट. सो वी कैन रियली रिलेट दोस थिंग्स, यू नो. कांग्रेस. चाहा से बन. बात हुए ना तो कुछ खा पी नहीं पा रहे थे. एक रोटी खा लेना तो भी काफी हो गया वो आने की. तो ये चाय नहीं पी पा रहे थे. बोले चाय में कुछ टेस्ट ही नहीं. मैंने कहा दूध बना के देती थी मसाला वाला और हर्बल टी बना के अच्छी लग रही. हाँ 5 दिन हो गए. मैंने कहा सर दर्द कर रहा है. नहीं मैंने कहा छोड़ दो ना तो चाय. तो अभी दूध पी. This is what I was talking about. Then behind to stop the tea is the tea powder which my husband brought this time. It's like masala wala and I don't like that. तो मैंने बोला कि नहीं ये गंदा. मतलब ये है कि it's not making us to live. मतलब वो बोले छोड़ दो ये गंदा है. मैं तो यही बोलती हूँ. Great. इनिशियली जब हम लोग अटेंड करते थे ना क्लासेस, तो उस टाइम पे हम दोनों वर्किंग थे और हम सोचते थे कहाँ से टाइम आएगा 16 माला करने के लिए. सो वन टाइम हमारा टीवी का रिचार्ज खत्म हो गया. हाँ केबल था और कुछ तो हाँ केबल वाले. सो वो हमने लिया नहीं एंड देन सडनली हमने देखा कि काफी टाइम मिल गया. हमारा चैंटिंग होने लगा. Amazing. हाँ अभी मोबाइल. yes. लास्ट टाइम मैंने स्क्रीन टाइम के बारे में बताया था ना. सो if you are okay, you all are okay. If you all are okay, there is this great technology which our dear scientists have only invented, which is called as parental control. ये जनरली हम बच्चों के मोबाइल में डालते हैं ताकि बच्चे सुधरते रहे, सुधर के रहे. But we can also become child and make somebody as our parent so that we can track our mobile usage for few period. आपको अपने मोबाइल में पेरेंटल कंट्रोल डालना है. You will become the child and Prabhuji, Mataji, someone may become parent and they will put restrictions on your mobile. रात्री 9 वाजता व्हॉट्सअप बंद, सकाळी 9 वाजता उघडेल. We all have that in our phone. As residents of Brahmachari Ashram, we are forced to do it. I cannot access YouTube browser even. Only allowed website for my mobile is iskondesiretory.com. And after 9, my phone goes in auto flight mode. Sometimes I turn it off because of some seva. But 9:15 to 3:30, it's on do not disturb mode with grayscale on. पूरा black and white हो जाता है phone. I put it somewhere. So ये आदत है, ये प्रैक्टिकल चीज है हमें करने से
सहायता होती है, and you can yourself track how much time I'm wasting. Thank you about bringing out this topic of tea. There are many videos which will help you to understand tea is not good for health at all. ये जो ट्रेंड वेस्ट अपना ब्रिटिशर्स ने लाया है, that has corrupted whole India practically. Many people face problems because of excessive tea drinking. पर वो डायग्नोसिस उनका उधर जाता ही नहीं चाय की तरफ. Problem created by tea that they don't understand. At least we have good replacement in form of herbal tea. We can try it out. अगर छूट नहीं रही है तो herbal tea है. छूट जाए तो बहुत ही अच्छा है, best. अगर so I've seen one video, one person, some any person, I don't remember name. He was mentioning that practically 60% of population in India gets cancer symptoms. The root cause is tea drinking. Statistics सुन के मैं शॉक हो गया. और हम आराम से चाय पीते जहर की तरह. हाँ, 16-17 बार तो पी लेती थी. अमर कृष्ण प्रभु की वाइफ तो 16-17 बार पी लेती थी, ऐसा वो खुद बोलते हैं वीडियो. It's quite normal for everyone. Like, however, it's very disastrous for the body. ये acidity problem तो most common, but people don't want to give it up. My uncle, I know, उनको पता है चाय पीने से एसिडिटी होने वाली है. चाय पियेंगे और लास्ट में एसिडिटी का गोली खा लेंगे. It's too much. I've told him so many times on face. पर अभी एक एज के बाद मैं नहीं बेंड कर सकता किसी को. So if all of you, if you have understood, if you know, there is still time, we can bend ourselves. We can mend ourselves. We can tend ourselves to Krishna. एक बार ना नवयोगेंद्र स्वामी महाराज के पास एक व्यक्ति आए, काफी टाइम से आते थे उनके पास. वो बोले, महाराज बहुत कुछ कर रहा हूँ, चैंटिंग भी कर रहा हूँ, पर ये चाय नहीं छूटता. क्या करें? महाराज बोले, अरे एक दिन पूरा ये जीवन छोड़ना है, नहीं शरीर छूट जाएगा. तुम्हारा चाय नहीं छूट रहा. सो इट्स वेरी एक्चुअली भक्ति में हम आते हैं ना, तो दैट इंटेलिजेंस ऑल्सो डेवलप्स, बिकॉज कृष्णा सेज इन 15th चैप्टर कि जो इंटेलिजेंस है उसकी सॉर्ड से, उसकी तलवार से आप अपने अटैचमेंट्स को काट सकते हो. सो इंटेलिजेंस कम्स व्हेन वी चैंट, because when we chanting is for mind basically, to purify our mind. और इंटेलिजेंस के लिए होता है शास्त्र. तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, जैसे क्लासेस करते हैं, तो दैट इंटेलिजेंस ऑल्सो प्यूरिफाइज. वी स्टार्ट थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन. तो थिंकिंग होता है तो देन एक्शन आ जाता है, बिकॉज वी डिजायर. अल्टीमेटली वी डिजायर टू डू दैट थिंग, तो तभी होता है, कोई भी कारण है ना. सो with bhakti, intelligence goes up, sharpens, and with that intelligence we cut the attachments. Yeah, so that happens. तो अभी इंटेलिजेंस और बढ़ाना है. ये जो प्रॉब्लम है नहीं हो पाता है, ये प्रैक्टिकली सब में है, टू स्मॉलर और बिगर डिग्री. दैट I know I want to, but I am not able to. इसे ओवरकम करने के लिए we need to remember this analogy of good dog and bad dog, which I have discussed earlier in class. We have two personalities in our self. One is a divine personality, जो जैसे हम बताते हैं कि पता है ये करना है, पर वो डिमोनियक पर्सनालिटी जो है हमारे अंदर, द बैड डॉग, इज
more powerful in current situation. क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे जन्मों तक अपने गुड डॉग को निग्लेक्ट किया है, एंड वी हैव वेरी हैप्पीली, very sumptuously fed the bad dog. So Maharaj tells this analogy in classes, and he says that bad dog is so strong now, उसके भौंकने की आवाज के कारण गुड डॉग के भौंकने की आवाज भी कभी कभी सुनाई नहीं देती. So when Paramatma within or our own self, after having knowledge of bhakti, when the sound comes, don't go to restaurant. That sound is very small. एकदम एक पे हो वॉल्यूम, म्यूट के जस्ट ऊपर. और जो बैड डॉग है वो चिल्लाता है, अरे लास्ट टाइम गया था, पता है कितना मजा आया था, चल. क्लास में बोल रहे नहीं जाना चाहिए रेस्टोरेंट, ठीक है मालूम है भक्त तो नहीं नहीं बनाया, प्रसाद नहीं है, लेकिन बहुत मजा आया था लास्ट टाइम, चल. एंड ही बार्स लाउडर एंड लाउडर, एंड वी से ओके माय मास्टर, एज यू से, एंड वी गो. दिस एक्ट is putting the good dog for further starvation and feeding the bad dog with more nourishment. और जब ये चलते रहता है, then we come into this loop of knowing the right but not able to do the right. What is the solution? Maharaj tells, I'll try to repeat the statement as it is. Try to feed the good dog, no matter how difficult it may be. This is important. मुझे पता है मुझे माला जप करनी है, पर अभी डिफिकल्टी है. Try to do it, no matter how difficult it may be. Eventually, the good dog will flourish and bad dog will perish. We need to have two things, patience and determination. थोडंसं धीर असलं पाहिजे आणि धाडस पण असलं पाहिजे. One have to be patient. धीरज रखो और दृढ़ता से काम करो. एक दिन ऐसा आएगा, वो बैड डॉग एकदम हड्डी पसली हो जाएगा, मेरे से भी बुरी हालत हो जाएगी उसकी. और गुड डॉग हमारे मलय प्रभु हैं मंदिर में, उनकी तरह एकदम तगड़ा जबरदस्त, कोई सामने आएगा तो ऐसे उड़ा सकता. So Maya, when it comes front of a good dog who is sufficiently nourished, good dog will bark once and Maya will run away. पर ये महाराज जब when he was explaining all these things, that one have to take conscious choice of feeding the good dog, and no matter how difficult it may be, starve the bad dog. And he said it may take, according to our level of advancement, days, months, years, decades, he added, or even lifetimes maybe, till the time our good dog is nourished and bad dog starves. But we need to continue doing the right and stop doing the wrong. And then the time will come when the barking of bad dog will be like, "Woo." महाराज ऐसे एकदम मिमिक्री करके बताए. And the day will come when the bad dog will die. That is the day we go back to Godhead. Hari Bol. I think I'll share that clip today on the group. Please do hear it before sleeping, after sleeping, tomorrow, day after tomorrow. It is that this discussion comes towards the end of the clipping. Starting with, there is a small it is about 13 minutes of a clip. Starting के 3-4 मिनट के बाद में ये पूरा discussion start होता है. You can try to hear it out. It is very inspiring. So here lies the solution which all of us
have the ability to work upon. Why patience? Because we understand that this bad dog is again and again stopping me from doing right. So be patient. And why be determined? All right, you are proposing me to do wrong? No, I'll be determined to do the right. And if we don't have might to do the right, then borrow it from Krishna. He is the mightiest. He is the Almighty. So ये एक कहावत है जहाँ बहुत बार काफी सारे भक्त कहते हैं, डोंट टेल कृष्णा हाउ बिग माई प्रॉब्लम इज, टेल योर प्रॉब्लम हाउ बिग माई कृष्णा इज, एंड द प्रॉब्लम विल बी गॉन. Noted down. These are golden lines which we should write somewhere and put on our lockers, on our desks, on our laptop screen corner, in a discussion. Yes, Mataji. अभी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं मजा चल रहा है. अच्छा है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं, और कृष्णा से कुछ मांग रहे भी नहीं, फिर भी कभी कभी विग्रह को देखा था ऐसा आंख से पानी आ जाता है, क्यों? नहीं कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा मैं पूछ रही हूँ, मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम Yes. और उसको मांगते भी नहीं, देव ना ऐसा होगा वैसे ऐसा भी नहीं. So it is good. We have all blessings of Krishna कि हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं है और हम भक्ति भी जैसा अपेक्षित है उस तरह की कर पा रहे हैं यथाशक्ति. पर भगवान के विग्रह देखकर कभी कभी भावुक हो जाते हैं, अश्रु आते हैं आंखों से. In a sense, it is okay, it is right. However, we should not look for such emotions always. This is the answer given by Radheshankar. I'm trying to repeat it. Because many a times, seeing a material situation also, we may start crying. है ना? जैसे कहीं पे बाढ़ आई, बहुत सारे लोग मर गए, बेघर हो गए, न्यूज रिपोर्ट चल रही है. स्क्रीन पे न्यूज रिपोर्ट देखते हुए भी कभी कभी हम रो पड़ते हैं, भावुक हो जाते हैं. So we should not misunderstand these emotions and emotions that we get in front of standing the deities as something special. This is some way of my sentimentality which comes out physically at times in form of tears. And I should not always look forward for such emotions. अच्छा लगता है भगवान के सामने खड़े खड़े अचानक से आंसू हो गए. We cherish that moment. It is good. But what thoughts come out of us? इसमें म्हणत है. If we get emotional while standing in front of deities and tears roll out of our eyes, but then if we pray to Krishna that let me serve you, guide me, how can I serve you more? Now I am trying to serve you at this level. Help me understand how I can go next level, because there is no limit to devotional service. Let me not just get caught up by such situations or feelings where I stand in front of you and just cry and do nothing for you. Let me be guided by you directly or your representatives to increase my seva for you. Then, if these emotions come and we are further inspired to serve Krishna, very good. But if we just remain looking forward for such emotional effects, special effects in our life, then it may eventually turn up to a false expectation on our part, and we may end up becoming a sahajiya कि भगवान आजकल मुझे रोना नहीं आता आपके लिए. Not required. कैसे होता है अभी किसी अपना माँ बाप को बहुत सालों से मिला ही नहीं है, 10-20 साल के बाद में मिलते हैं, जब भी एक बोलते ना वो गुस्सा आंसू ऐसे निकलते हैं, वैसे गुस्सा होता है, बट ऐसा कुछ Yes, that's what I'm telling. That is good. ऐसा तो नहीं होता है कभी. That is good. But our aim is not to look forward for such situations again and again.
My only aim is to serve here. ये तो पहले पहले तो कभी ऐसा होता ही नहीं था मेरे को। वो कब से वो वृंदावन गया, बंसीवाटी गया ना, उसके बाद में मुझे ऐसा कुछ फीलिंग होता है। Nice, good. एक्चुअली बंसीवाटी जाने के बाद में मुझे बहुत ही कुछ हो गया, मतलब वो जगह छोड़ने की मन ही नहीं हो रहा था मेरे को। एक्चुअली उसके बाद में फिर अभी विग्रह को देखा था, कभी-कभी ऐसे Yeah. निकलते हैं, बट कुछ भी रीज़न नहीं एक्चुअली। मैं भी सोचती अपने कुछ प्रॉब्लम है क्या? अपनी तो प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर क्यों ऐसा होता है? So as I explained, it is a sentiment that comes out, which is similar to sometimes when it comes out, if we see general people suffering in this world, it is a different kind of sentiment. पर हमारा गोल इस सेंटिमेंट को चेरिश करना या एक्सपेक्ट करना नहीं. नहीं, बट फिर भी ऐसे फीलिंग होता है फिर बाद When it में। happens, good. Yeah. Thank Krishna that I could connect with you emotionally at a उसमें level. कोई डिवोटी रहेगा तो देखा रहेगा कि क्या प्रॉब्लम है। That's what. Yeah, Generally, when such things happen, we people like that. no, we try to cover it up as soon as possible. It's not that other devotees don't cry. There are devotees who cry. I remember Nityananda Rishi is coming now. His Holiness Navayogendra Swami Maharaj. He is one of the disciples of Srila Prabhupada. And every year he is scheduled to come to Pune on Nityananda Rishi. पिछले 2-3 साल से नहीं आ रहे शायद. आ रहे? I don't remember. So in 2017 or 18, I remember he was in Camp Temple, Radha Kuchweri Mandir. और अपना पार्किंग एरिया में स्टेज है बड़ा, वहाँ पर कथा होता है और सब लोग पार्किंग में बैठते हैं. एंड ही स्पीकिंग श्री नित्यानंद कथा, जगाई मदाई के उद्धार का लीला का वर्णन कर रहे हैं महाराज. एंड ही ऑन स्टेज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन व्हाइल स्पीकिंग just started crying. And he is only speaking 2 words. इतनी करुणा. And छोटे बच्चों की तरह रो रहे हैं. He couldn't stop. So it's not that devotees don't feel crying. And obviously, a person like at the level of Maharaj, when he is crying, he is actually able to connect himself with Krishna directly. And that's why he's crying. And even many times when we get a very strong spiritual, surcharge or ambience where suddenly we become emotional, we may feel sad about our anarthas, about our condition, about our desire and lack of our current, the gap between our aspiration and our current state. Because of that, we may get into modes like lamentation, or there may not be at all any reason, just tears may come out while hearing a kirtan sometimes. But these emotions should be tried to hide it. Thank Krishna that he is giving such emotional effects in our life. Remember them, but learn a lesson and take up some measures to increase our seva for Krishna so that he can reciprocate more. Okay, thank you. Okay. हाँ, मैंने अपना ऑफिशियल टास्क कर लिया. At least I am not. All right. Okay, so further qualifications of all of us, which we should develop in us, we'll continue studying next Saturday. Please forgive me if at all I hurt any one of you while speaking or trying to inspire all of us. And please pray for me that I sincerely apply every word that I am speaking for all of you. श्रीमद् भगवद गीता की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. समवेत गौर भक्त वृंद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. Thank you. Hare Krishna.
आप करो लेकिन ना I was driving a few days back in the morning. I was coming to school and the same जो आप लोग कीर्तन हम करते हैं उसे ना ट्यून मैंने मुझे ऐसे ये हुई तो I want to just say it in front of you all. राधे 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कंटिन्यू Because of pure while just driving मतलब गाड़ी पे आते मैं बोलती हूँ हमेशा लेकिन वो आ गई धुन तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हरे कृष्ण yes I'm hoping that only No, now the reason will come. We as, okay, if you see me as a role of, in the role of a guide, I want to appreciate your inspiration, but I want to. correct I know Radhe Oh, Radhe I yeah. know but I don't know वो क्यों आया पता नहीं प्रभु जी पता नहीं मतलब ऐसे कुछ भी नहीं था ध्यान में I was driving and मैं जैसे बोलती हूँ चैट करते जाती हूँ मतलब जैसे हमने ये करते तो वो आ गया Yeah, no problem. Generally, we relish Hare Krishna Mahamantra, and on the days, special days like Radha Ashtami, we can explicitly glorify Srimati Radharani by singing various bhajans, even dhun's like this, where we only recite Radhe, Radhe, Radha. But in normal cases, we prefer, or if I put it in a better way, we remain faithful to Hare Krishna mantra. And Srila Prabhupada taught by his own example. He, even while living in Vrindavan, when he would walk by in Vrindavan, other Brajavasis, as there is a trend, they would greet him by saying, Radhe Radhe. And Srila Prabhupada would insistently respond, Hare Krishna. He wanted to teach all his disciples, especially because there were Western disciples. He wanted to be further more cautious and careful right from the beginning that my disciples don't catch wrong trends. Sorry, That's good. Guru means heavy sometimes. No, that's why I वही तो रहता है ना सब करेक्शन तो करना चाहिए So, yeah, you can very joyfully, happily sing this dhun, no problem. Correct. Yeah, on Radhashtami, you are welcome here. We will prepare a stage for you. We can do nice kirtan with Radhe, Radhe, Radhe. But there is a Hare Krishna. No, I will sing that, no? So that is fine. This was not just for you. In general, I thought it is right time to give a clarification in the beginning. Actually, small things like this make a lot of difference. Yamuna Mataji, uh,
once saw some devotees started singing Mangalarti Kirtan in a different way. So in Mangalarti, we sing a particular tune, which is a fixed tune all over ISKCON. And when she saw that some devotees started singing a different meter, different tune, she requested the GBC during that time to circulate a common letter to all ISKCON centers, mentioning that don't change anything that Srila Prabhupada has taught, otherwise we will end up creating a lot of apasampradayas. Apasampradaya is a branch out of a main sampradaya which deviates a little from the original teaching. And I took this very seriously and started correcting devotees. When I was staying in voice, I just share a personal experience. In general, this body is a temple. We consider this body as a temple, and therefore we mark this body with 13 tilaks at different places in our body: forehead, chest, navel, neck, the belly, both sides, the lower arm, shoulders, both sides, and then the shikha part, 13. Yeah, back also, upper back and lower back. So each tilak goes in a sequence with a particular mantra to chant for it. And obviously, many times morning 4:30 reporting. So devotees sometimes get up by 4:05, 4:10, and they have to fold their beddings, go to bathroom, take a bath, put on dhoti kurta with 13 tilaks, and reach at 4:30 sharp in temple hall. So when I was staying in our youth center at Survi Kunj Voice, so obviously everywhere this happens. In general, I'm saying, then devotees started for getting ready, and then obviously there is only 2 or 3 minutes remaining when they come out of the bathroom in their towel, and then they have to put on a dhoti, put tilak, put kurta, and come running. तो 3 मिनट में ये एक प्रोफेशनल के लिए संभव है, पर नए भक्त के लिए नहीं. और ये प्रोफेशनलिज्म सब लोग सीख जाते हैं बहुत जल्द. बट तो उस समय में क्या होता है, मंत्र बोला या बोला नहीं बोला, तिलक ठीक से लगे नहीं लगे, just reach on time. That is the goal. This habit starts percolating during the day also. One doesn't sit properly on a floor and with proper mantras while chanting, put on tilaks. And then eventually what happens? Sometimes some devotees will change the sequence for ease of applying the tilak faster. And some devotees will skip mantras. So specifically, this change of sequence, I corrected one devotee. Prabhuji, which sampradaya are you? I asked him. बोले समझी नहीं पाए स्टार्टिंग में. बोला नहीं, आप तिलक लगा रहे थे इसलिए पूछ रहा हूँ आप कौन सी संप्रदाय से हो. तो immediately it clicked to him that he is not putting in right sequence. So he understood. Sorry, bro. He said, I'll keep it, be careful next. So small things can make big difference. And if we are not careful in small things, we'll be careless in big things also eventually. Hare Krishna. So we'll not do Kirtan today. You already did. Our time is over. No, there was Mahamantra and there is Radharani is calling, which we can see that today is Radhashtami. Okay. कोई यूनिवर्स में तो आज हो गई राधाष्टमी पक्का. श्री हरि नाम प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि. Let's have prasadam. Special menu today. Thank you Prabhus for being online. Suresh Prabhu, after long time आपका दर्शन हुआ आज. Saurabh Prabhu, Anand Prabhu, thank you for your time. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरि हरि. I hope आप सुन पाए. यस प्रभु जी. हरि बोल. प्रसादम है, मिस हरि बोल. प्रसादम है प्रभु जी, आप आ सकते हैं. राजमा रोटी, जीरा राइस और कढ़ी, and
सुपर बिग काला जामुन। आ जाऊं क्या? आइए प्रभु जी प्लीज, आई एम वेटिंग। अगर आप आएंगे तो मैं रुकता हूँ, अदरवाइज आई वाज थिंकिंग आई विल गो। आता हूँ प्रभु जी, आ रहा हूँ। हरी हरी जय, वेलकम। मैं अकेले आ रहा हूँ, आई डोंट नो अबाउट दिस गाइस बट आई एम नो पिकिंग। प्रॉब्लम, वी विल गिव यू पार्सल फॉर अदर्स। हरी हरी। आई एम आनंद सॉरी प्रभु, ट्रबलिंग यू। हाँ you प्रभु are जी। also very close, please come for prasad। नेक्स्ट टाइम प्रभु जी, अभी नहीं। Okay, थैंक we यू। always welcome you, don't यस, hesitate। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। सुरेश प्रभु, अगर आपको संभव है, लेकिन आप थोड़ा दूर रहते हैं हमारे सुरेश। मैं दूर रहता हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी हरी। ऑल राइट प्रभु जी, दंडवत। यस यस, बहुत दिन के बाद ज्वाइन हुआ प्रभु जी मैं। थैंक यू, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे। यस यस, आप यहीं पे हो या गांव में हो? गांव में हूँ प्रभु जी, कब लातूर। आ रहे हैं वापस? वापस कुछ अभी प्लान नहीं है प्रभु जी। अरे एकदम बिना प्लान बनाए चले गए आप। ठीक है, हाँ ना प्रभु आपको आई होप वहां पे आप श्रीनिवास प्रिय प्रभु के संपर्क जी। में यस हो। यस, श्रीनिवास प्रभु के साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन ये सब स्कूल में साथ में ही किया है। चेतन प्रभु जी थे साथ में और मेरे साथ। वेरी नाइस। माला वगैरह हो रहा है आपका? हाँ, माला जप हो रहा है? जो माला जेपी थोड़ा नहीं हुआ था प्रभु जी। इसलिए सत्संग चाहिए ना। यस यस यस, वहां पे आए तो अच्छे से कर पाता था मैं, यहाँ पे आके थोड़ा ये हो गया, नहीं हो पा रहा कोशिश कीजिए। है। यस 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 प्रभु जी, आपकी कृपा चाहिए। मेरी प्रार्थनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू प्रभु जी। हरि चलेगा। यस, हरी बोल प्रभु जी। ओम। थैंक यू।